Can anyone tell me the definition of aromatic compounds? How to know if a given compound is aromatic or not? Cyclic compound which is planar and have 4n plus 2 pi electrons. Very good. Cyclic compound which is planar and having 4n plus 2 delocalizable electrons, and the conjugation has to be continuous. बीच में gap नहीं होना चाहिए. Cyclic compound planar, ये इसके साथ साथ there has to be continuous conjugation. जो हाइड्रोकार्बन में हमने प्रिपरेशन मेथड देखा है बेंजीन के लिए, कैन यू टेल मी द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन फ्रॉम alkanes? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन. साइक्लिक पॉलीमराइजेशन नहीं, वो तो अल्काइन से है. आई एम आस्किंग फ्रॉम alkanes. एरोमेटाइजेशन रिएक्शन. एरोमेटाइजेशन में क्या करते हैं हम? व्हाट आर द रिएजेंट्स यूज्ड? वेनेडियम पेंटॉक्साइड, V2O5, Cr2O3 और MO2O3. ओके, और ये सब लोग को याद है ना? So first preparation method is from aromatization of alkanes. In this particular case, we are interested in hexane. If you are doing aromatization of heptane, you will be getting toluene, right? So if you are having hexane C6H14 in the presence of Cr2O3 or V2O5 or MO2O3 molybdenum oxide, you will be getting benzene. Okay, बेंजीन आते समय C6H6 है ना? C6H6 मतलब कितना हाइड्रोजन की जरूरत है? 8 हाइड्रोजन, तो प्लस 4H2. दूसरा रिएक्शन साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन और एसिटिलीन. इसके लिए हमने क्या देखा है? C ट्रिपल बॉन्ड C, C ट्रिपल बॉन्ड C. तो ये वाला बॉन्ड यहाँ पे लेके आओ, ये वाला यहाँ पे लेके आओ, ये वाला यहाँ पे लेके आओ. With the help of red hot Fe tube, then you will get benzene. Okay, ये दोनों reactions already हमने देखा है. इनके अलावा suppose if I am having benzoic acid, suppose if I am having a benzoic acid, what is benzoic acid? benzene के ऊपर COOH. Okay,
If I want to form benzene from this particular compound, क्या करना पड़ेगा? If I remove that particular COH group, you will be left with benzene ना. तो COH को निकालने के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? Can anyone answer me? If Sir, you कोई want भी strong base. कोई भी strong base को यूज किया तो आशुतोष, it is an acid, it will be having an acid base reaction. तो COH से H plus निकल के आएगा, but वो CO तो वैसा ही रहेगा. I want to remove that COH. कोई मेथड पढ़ा हमने जिसमें COH को So हटा दिया. decarboxylation. Very good. Decarboxylation using soda lime. So from benzoic acid, do decarboxylation. Decarboxylation using soda lime. Soda lime क्या होता है? It is NaOH plus CaO taken in the ratio of 3:1. So if you are doing decarboxylation, this will lead to the byproduct Na2CO3. CO2 जो निकल के आएगा, it will be reacting with NaOH to form Na2CO3. I hope this method is also clear from benzoic acid decarboxylation. Okay, last preparation. You can do reduction of phenol. Reduction of phenol. If you are having phenol, अगर ये जो OH part को उसको reduce कर लिया तो it will be converting into hydrogen. As a reducing agent, you use zinc dust in the presence of heat. This will be converting into benzene along with formation of zinc oxide. Okay, clear है? HR preparation methods. Out of these 4 preparation methods, पहले 2 preparation methods already देखा हमने. Aromatization of alkanes. If you are having hexane, you will be forming benzene. If you are having heptane, you will be forming toluene. Cyclic polymerization of ethane में the reagent used is red hot Fe tubes. If you are having if you are having propine, in that case you will get 1,3,5 trimethyl benzene. If you are having ethane, you will be getting benzene. If you are having propine, in that case you will get 1,3,5 trimethyl benzene. From benzoic acid, if you remove that COH, where you will be using soda lime, and the reaction is called as decarboxylation, you can get benzene. If you are having phenol, if you are doing reduction of it, reduction के लिए reagent है zinc dust and heat, it will be converting into benzene. Organic chemistry में oxidation and reduction reactions के लिए हमारे पास कभी भी कुछ mechanisms नहीं रहेगा. So don't worry about the mechanisms. जिनके लिए mechanisms है वो ज़्यादा important होगा. जिनके लिए mechanism नहीं है, please don't bother. Okay. Next, very very important, reactions of benzene. उससे पहले reactions of alkanes के केस में हमने ऐसा कुछ बात किया. The characteristic reactions of alkanes is free radical reactions or free radical substitution reaction. Substitution reaction मतलब you will be removing one of the hydrogen and you will be attaching a new group. And mechanism क्या होता है? During the mechanism you will be forming free radicals. Free radicals क्यों बन रहे हैं? Because carbon hydrogen के बीच में electronegativity difference is very very less. As a result, the intermediate will be most of the times free radicals. Hence, the characteristic reactions of alkanes is termed as free radical substitution reaction. When you have alkenes or alkynes, in alkenes and alkynes, you have a pi bond. You are having an unsaturation. You are adding, if you are adding any reagent to the particular pi bond, any reagent can be classified as an electrophilic part along with a nucleophilic part. Out of these two, electrophile will be approaching first the alkene, which will be adding onto the alkene to form a carbocation. Okay. वो carbocation आने के बाद, as it is positively charged, it will be attaching to a nucleophile. So net में you are breaking the pi bond and you are making a bond with the electrophile and the nucleophile. You are not substituting any of the group which is already present in the alkene. You are not substituting any of the group which is already present in the alkene with another group. You are breaking the pi bond and you are attaching two new groups. Hence the reactions are called as addition reactions.
एडिशन ऐड करेंगे हम उनके ऊपर. ओके, as the electrophile is added in the first step and it is leading to the formation of carbocation, we are saying that the characteristic reactions are electrophilic addition reactions. alkenes और alkynes के लिए भी वही रहेगा. alkenes और alkynes के लिए characteristic reactions क्या होगा? electrophilic addition reactions होगा. Okay, now we will try to see what will be the characteristic reactions of benzene compound. Okay, we will try to see reactions of benzene and we will try to analyze the characteristic reactions of benzene. Reactions of benzene. Okay, ठीक है. ये benzene जो है, it is similar to alkene because it is also having a pi bond. Suppose if you are adding any reagent, every reagent can be treated as an electrophilic part along with nucleophilic part. क्या करना है? एक जो pi bond है, just like alkenes में जैसा करते थे हम, pi bond को break करके एक के ऊपर electrophile लगा दो and दूसरे के ऊपर nucleophile लगाओ. Okay, this particular reaction is nothing but addition reaction, or the product is nothing but addition product which formed because of the addition reaction. Okay, अभी ये जो particular reaction है, under normal conditions, the reaction is not possible or feasible. मतलब ये जो reaction है होगा नहीं है. Can anyone tell me why? अगर हम सोच रहे हैं alkene जैसा ही कुछ सोच रहे हैं, उसके ऊपर pi bond है, और जो pi bond है उसके ऊपर addition करके electrophile nucleophile add कर दिया, which will lead to that particular addition product. But I am saying that under normal conditions, this particular reaction is not feasible. Can anyone think of the reason? सर एरोमेटिक है ना, वो aromaticity lose हो रहा है. Initially ये जो benzene है, this is aromatic, and ये जो particular compound जो मिला है अभी, this is non-aromatic. Which is more stable, aromatic or non-aromatic? Aromatic is more stable, right? So in general, कोई भी चीजें unstable से stable होने के लिए कोशिश करेगा. If I am making that particular stable compound into more unstable compound, वो करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा. So this particular reaction will not happen at normal condition. ये होगा ही नहीं. Extreme conditions में डाल के कुछ बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा के ऐसा कुछ किया तो हो सकता है. Okay? But general conditions में हमको देखना है. Actual में क्या होता है? The reaction, if you are adding an electrophile along with the nucleophile, the reaction which will actually take place is the electrophile will be added onto the benzene ring and one of the hydrogen will be substituted. और जो substitute हो जाएगा, it will be going with the nucleophile. So this will be the reaction. इधर क्या हुआ? एक हाइड्रोजन जो पहले था कार्बन के ऊपर, that got substituted by electrophile. So I can say the reaction is an electrophilic substitution reaction. Electrophile जाके substitute किया. It is not a free radical reaction. Everyone, please understand this. Why am I referring to this as electrophilic substitution reaction? Because the electrophile is going and substituting that particular H positive. Okay. As this reaction is happening on the aromatic compound, it is also called as electrophilic aromatic substitution. Electrophilic aromatic compound के ऊपर substitution हो रहे हैं, hence it is called as electrophilic aromatic substitution. Simply referred to as EAS, electrophilic aromatic substitution. Is this clear? ठीक है. अभी हमको ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन में मैकेनिज्म भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा क्यों होता है, कैसे हो सकता है, क्यों होता है, ऑलरेडी देखा हमने क्यों होता है. बिकॉज इफ इट इज हैविंग एन एडिशन प्रोडक्ट, द एरोमेटिसिटी इज लॉस्ट. इफ यू आर हैविंग ए सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, अभी भी एरोमेटिसिटी है. देखो पहले भी एरोमेटिक है, बाद में भी एरोमेटिक है. ओके, सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म इन्वॉल्व्ड इन दिस.
इलेक्ट्रोफिलिक क्या पढ़ने वाले हैं हम, वो क्लियर है ना सब लोग को? एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, also referred to as EAS, which is also abbreviated as SEAR. S indicates substitution, E indicates electrophile, substitution of the electrophile on the aromatic ring. Okay, substitution of the electrophile on the aromatic, SEAR. वैसा भी refer करते हैं कभी कभी, but most common representation is EAS. Okay, in any EAS reaction there will be 3 steps. Okay, step 1 is generation of electrophile. और जो electrophile है वो क्या है हमको आइडेंटिफाई करके उसको जनरेट करना है सिस्टम के अंदर. जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. स्टेप 2 एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. एंड स्टेप 3 लॉस ऑफ H positive to regain aromaticity. Step 1 is the generation of electrophile, step 2 is the addition of electrophile, and step 3 is the loss of H positive to regain aromaticity. अभी ये जो पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, we will be seeing different reagents. different reagents में जो फर्स्ट स्टेप है वो different रहेगा, क्योंकि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल का प्रोसेस है और different रहेगा पर different reagents. बट एक बार इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होने के बाद स्टेप्स 2 and 3 आर कॉमन फॉर ईच एंड एवरीथिंग. तो फर्स्ट वी विल सी स्टेप्स 2 and 3. अभी हम मान रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया, सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रोफाइल है. वो कैसे जनरेट होता है, इट विल बी रिएक्शन स्पेसिफिक. हर एक रिएक्शन के लिए अलग अलग तरीके से होगा. तो जब भी रिएक्शन पढ़ेंगे उसके बारे में डिस्कस करते हैं. बट एक बार इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया है, द स्टेप्स 2 and 3 आर कॉमन. First there will be addition of electrophile and there will be loss of H positive. So steps 2 and 3 के बारे में देखते हैं. Okay. So step 2 में क्या हो रहा है? In step 2 there is addition of electrophile, or there is, you can also say, attack of electrophile on benzene or on the aromatic compound. So if you are taking benzene, and whenever an electrophile approaches benzene, can I say there will be electromeric effect? Electromeric effect में क्या होगा? The pi bond will be polarized onto either of the carbon atoms. अभी इस particular case में it is symmetrical, so कैसे भी करो फर्क नहीं पड़ेगा. So यहाँ से यहाँ पे pi bond polarize होगा. That particular negative charge will be attacking the electrophile. Always show the attack from negative to positive. Never show the attack from positive to negative. Okay, always electrons will be drifted from higher density to lower density. I hope this is clear. Okay, so अभी इस particular step में क्या होगा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा एंड ये जाके इलेक्ट्रोफाइल जाके यहाँ पे लग गया, इसके ऊपर और एक हाइड्रोजन है. Can there be resonance in this particular intermediate? It is pi alternate positive. So resonating structures भी ड्रॉ कर लेते हैं. ये यहाँ पे आएगा, उसके वजह से डबल बॉन्ड इधर आया बट पॉजिटिव चार्ज इधर आया. दिस इज H and E. नेक्स्ट ये वाला यहाँ पे आया, तो पॉजिटिव चार्ज इधर होगा, H and E, right? If you want to show the resonance hybrid of this, वो कैसे दिखेगा? और जो रेजोनेंस से कहाँ तक हो रहे, ये वाला पर्टिकुलर रीजन से यहाँ तक हो रहे ना, इस रीजन तक. ओके, सो इफ यू वांट टू शो द रेजोनेंस हाइब्रिड, you can show like this. और जो pi bond है, it is distributed in this particular region. Okay,
यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल, एंड वो जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज प्रेजेंट ऑन दिस कार्बन, on this carbon and on this carbon. The positive charge is not present on these carbons, okay? It is present on other carbons. This is the hybrid. ये जो पर्टिकुलर इंटरमीडिएट बनाया है ना हमने, उसके लिए एक स्पेशल नेम है. The name is, it is called as sigma pi complex, also called as rhenium ion, also called as Wieland complex, which is also called as cyclohexadienonium ion. Cyclohexadienonium ion. वो जो पर्टिकुलर इंटरमीडिएट बनाया हमने, that intermediate is called as sigma pi complex, rhenium complex, or Wieland complex, or also called as cyclodienonium ion. Clear है? This is the step 1. So immediately after step 1, what happened to aromaticity? It has converted into a non-aromatic compound, a carbocation मिला, which is an intermediate. Okay? So step 2 में क्या होगा? It will be losing H positive. और step 3 में क्या होगा? It will be losing H positive to regain the aromaticity. Loss of H positive by a base. Loss of H positive by a base. So the complex which we are having, or the intermediate which we are having, is यहाँ पे positive hydrogen electrophile. This will be reacting with a base which is present in the system. The base can be water or the base can be the nucleophilic part. ये जो Nu minus जैसे रहेगा, ENU में दो parts है ना. ENU में you have E positive and Nu minus. That Nu minus can act as base, Lewis base. So that particular Nu minus, or I am representing in this case as base B minus, it will be attacking on this particular hydrogen. It will be removing the hydrogen as H positive. H positive जैसा आते ही इधर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बन जाएगा. So you have regained aromaticity. So this will lead to the formation of aromatic compound again plus BH. क्लियर है वाला पार्ट? अभी इस पर्टिकुलर केस में ये दोनों स्टेप्स में, कैन यू टेल मी which step will be happening at a faster rate and which step will be happening at a slower rate? ये दोनों स्टेप्स में से कौन सा स्टेप जल्दी होगा? ऐसा सोचो. Step 3, sorry. हाँ, step 2 या step 3 ऐसा सोचो. Whenever some system is achieving stability, if it is initially unstable and if it is achieving stability, that particular decision will be taken immediately. Stability आ रहा है तो जल्दी हो जाएगा वो वाला particular decision. Suppose कोई एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, जो बाहर घूमते जा रहा है इधर उधर, he is not studying. अगर उसको opportunity दिया है पढ़ने के लिए, he will take that particular decision immediately. Suppose कोई एक स्टूडेंट है पढ़ाई कर रहे हैं, but because of some issues उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ रहा है, वो जो particular decision है, he will be taking that after considering lot of other factors. Okay, उसके लिए time ज़्यादा लगेगा. Or else, if you are achieving stability, and in that particular case, the time taken for that particular step will be very, very less. If you are achieving instability, the time taken for that particular step will be more. Okay. So out of first step and second step, in the first step, I am converting an aromatic compound into a positively charged species, which is a non-aromatic compound. So ये जो first step है, stable से unstable हो रहा है. So that particular step will be happening or will take place very, very slowly. I can say that. Step 3 में क्या हो रहा है?
I am removing H positive and I am regaining aromaticity. So initially जो non-aromatic था और partially charged था, it is converting into neutral species which is aromatic. Okay, so that particular step will happen at a faster rate. So in any reaction which is a multi-step reaction मतलब where there will be more than one step. The slow step, this particular step, can I say it will be a slow step? The slow step is also called as rate determining step, RDS. Rate determining step. So the overall, ऐसा क्यों बोलते हैं? The overall rate of the reaction will be depending on this particular step. ये स्टेप हुआ तो दूसरा वाला स्टेप इमीडिएटली जल्दी हो जाएगा. सपोज स्टेप 2 होने के लिए 1 आवर मानते हैं, स्टेप 3 होने के लिए 1 सेकंड या 1 मिनट मानते हैं. So overall rate of reaction will be calculated with respect to that step 2. क्योंकि step 3 से ज़्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा है. In comparison with step 2, step 3 is very fast. The step which is very slow, the overall rate will be depending upon that particular slow step. Hence, it is also called as rate determining step. Is this point clear? ये जो particular step है, loss of proton by base to regain aromaticity, this is a fast step. Is this clear? Is this clear? Yes, sir. Okay. And usually you will be writing the rate of the reaction with respect to the slow step. Rate of the reaction हम chemical equilibrium में ऐसा कुछ पढ़ा है. The rate of the reaction is directly proportional to the concentration of the reacting species raised to the powers of their stoichiometric coefficients. ऐसा कुछ पढ़ा याद है? हाँ. Okay. So इस particular reaction में if I want to write the rate, what is rate? The rate of the reaction is directly proportional to the concentration of the reacting species. क्या क्या है? In this case, you have benzene and you have electrophile. So rate will be equal to K into concentration of aromatic compound ARH उसका representation into concentration of electrophile. This will be the rate equation. ये जो rate equation है कैसे लिखा है? Based on step 1. Step 1 को ही देखना है because it is the slowest step. Is this clear? हाँ. हाँ सर. और जो rate equation लिखा है वो समझ में आया ना? हाँ. Okay. अभी थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं. If I want to increase the rate of the reaction, rate के लिए equation देखो. The rate is depending upon concentration of the aromatic species and the concentration of the electrophile. Okay. अभी बताओ. Please everyone think on these terms. If I want to increase the rate of reaction, क्या क्या कर सकता हूँ? दो चीजें तो डायरेक्टली इंक्रीज करेंगे. एग्जैक्टली दो चीजें तो डायरेक्टली दिखते हैं हमको. कैटलिस्ट के बारे में, कैटलिस्ट यू कैन ऑलवेज यूज द कैटलिस्ट. उस वो तो कोई भी रिएक्शन के लिए वैलिड है. इफ यू वांट टू increase the rate of reaction based on the reactants present inside the system, उसके लिए क्या कर सकते हैं? You can increase the concentration of aromatic compound as well as you can increase the concentration of the electrophile. ये भी obvious है ना, जितना ज्यादा amount of reactants रहेगा उतना ज्यादा rate रहेगा. Okay. दूसरा क्या और क्या कर सकते हैं? अभी ये जो electrophile है, first of all understand this, very important. आगे इसका discussion करेंगे हम. Electrophile benzene के ऊपर जाके अटैक क्यों कर रहे हैं? Because inside the benzene ring you are seeing some electron density. As a result, the electrophile is approaching that particular benzene ring. If the benzene ring has more and more concentrated electron density, in that case it will be attracting the electrophile immediately. If it is attracting the electrophile immediately, this will be attacking on this particular benzene ring and it will be undergoing that particular step 2. ये वाला step 2 हो जाएगा. In that case, the rate will be increased. Okay. So in order to have high concentration of electron density inside the benzene ring, the benzene must be attached to groups, or some groups must be attached to benzene which are electron releasing.
अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हुआ तो क्या होगा, इस पर्टिकुलर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा. एक बार इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा तो इट विल बी अटैकिंग ऑन द इलेक्ट्रोफाइल. If it is attacking immediately on the electrophile, the rate of reaction got increased. Agar if you are having any groups which are electron withdrawing, in that case the electron density from the benzene ring will be decreased. As a result, the rate of reactivity also will be decreased. Is this clear? और क्या कर सकते हैं? This is with respect to the benzene aromatic compound. और क्या हो सकता है? If the electrophile is highly desperate for electrons, मतलब उसका strength, electrophilic strength बहुत ज्यादा है तो then also you can have a faster reactivity. तो क्वेश्चंस में हमको ऐसा पूछा जाता है, which of the following has greater rate of reaction? They will be giving you some variations of benzene compounds and they will ask you what is the order of rate of electrophilic aromatic substitution reaction. तो जिनके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स रहेगा, that will be having a faster rate. Is this clear? Everyone? हाँ सर. Okay. So उसी पॉइंट्स के बारे में लिखना चाह रहा हूं मैं. ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगेन ये जो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने से ये वाला पर्टिकुलर पार्ट्स में हमको वेरिएशन आएगा, उसकी वजह से रेट बढ़ेगा. इफ यू आर हैविंग मोर एंड मोर एक्टिव बेंजीन रिंग, मतलब मोर कॉन्सेंट्रेटेड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहा तो तभी भी बढ़ता है ना. दैट विल बी सीन इन दिस पर्टिकुलर रेट कांस्टेंट. ये जो k है उसका वैल्यू चेंज होगा तब जाके उसका रेट बढ़ेगा. Because by increasing the density or electron density inside the aromatic compound, I cannot increase this concentration. The AJO terms, these are purely concentration terms. I am increasing the strength of the electrophile and I am increasing the concentration of electrons inside the benzene ring. If I am doing that, the variation will be seen in K. K में कुछ फर्क आएगा, उसकी वजह से rate बढ़ेगा. So I can write the rate constant K. Rate constant K depends upon following factors. 1, nature of electrophile. इसमें क्या लिख सकता हूं? Stronger the electrophile, faster is the rate, or more is the rate, faster is the rate के अलावा more is the rate, hence value of K increases. Okay. Similarly, I can discuss on nature of the aromatic compound. Nature of ARH, more is the electron density, in the ring, faster will be reaction. Okay, more is the electron density in the ring, faster will be reaction. Suppose if I am giving you 3 compounds, one which is having electron releasing group attached to it, which has no groups attached to it, and which has electron withdrawing group attached to it. Okay, what will be the reactivity order? Less than. Less than या greater than? Electron releasing group रहा तो Greater than. to release it into it. Okay, electrons will be withdrawn from it. So the answer is this greater than this. Okay. एक क्वेश्चन दे रहा हूं, प्लीज आंसर दैट क्वेश्चन. What is the order of reactivity of the following compounds
towards an electrophile. Okay, the electrophile is the same. Remember everyone, the electrophile is the same. The compounds given are benzene, but instead of hydrogens you have deuteriums. Instead of deuterium, now you have tritium. Tell me the order of reactivity of these three compounds, A, B, and C. A less than B less than C. A less than B less So than greater. C. Okay. दूसरा Greater than. A greater than B greater than C. जो A less than B less than C बताया है, can you tell me the reason? वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में वो T greater than D greater than H होता है ना. इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में T greater than D greater than H होता है, बट ये जो रिलीजिंग का इफेक्ट जो है it is with respect to inductive effect, and inductive effect is very 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 weak effect. Okay, and उसमें भी हम isotopes में देख रहे हैं. Okay, tritium is the more electron releasing when compared to deuterium and hydrogen, but the electron releasing effect of it is very 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 less, very very less. तो इसके वजह से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट की वजह से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जोया. किसी ने बेंजीन ग्रेटर देन नॉर्मल बेंजीन विद हाइड्रोजन ग्रेटर देन ड्यूटेरियम ग्रेटर देन ट्रिटियम बोला है. व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस? समृद्धि, तुमने A greater than B greater than C कहा है ना, what is the reason for that? No, sir, sorry. देखो एक बार फिर से मैकेनिज्म ऑब्जर्व करते हैं. इन द मैकेनिज्म व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप इज द अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल. इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोफाइल के एडिशन के स्टेप में आई एम सेइंग दैट हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, ऑल ऑफ देम आर हैविंग ऑलमोस्ट सिमिलर इंडक्टिव इफेक्ट्स ओनली. एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रोफाइल को उस पर्टिकुलर बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ज्यादा फर्क नहीं दिखा. ओके, सो द फर्स्ट स्टेप सब लोग के लिए एक जैसा ही हुआ. सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है? लॉस ऑफ प्रोटॉन. इन केस ऑफ ड्यूटेरियम इट विल बी लॉस ऑफ डी पॉजिटिव. इन केस ऑफ ट्रिटियम इट विल बी लॉस ऑफ टी पॉजिटिव. Out of C bond H, C bond D, and C bond T, which will be the strongest bond? Out of C bond H, C bond D, and C bond T, which is the stronger bond? CH. CH नहीं है. इसके लिए इसके बारे में हमने बात किया. Heavier is the isotope. Heavier is the isotope. Stronger will be the bond. Heavier is the isotope, stronger is the bond. इस पर्टिकुलर केस के लिए भी हमने क्वेश्चन भी किया है. मैंने तुम लोग को ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया है. CH3, everyone please try to remember. CH3 positive और CD3 positive. Out of these two carbocations, which is more stable? Out of 1 and 2, which is more stable carbocation? 2. Second is not more stable. 1 is more stable. Again, you are seeing only by inductive effect. With respect to inductive effect, CD3 is having more inductive effect when compared to CH3. But inductive effect से भी ज़्यादा dominant कौन है? It is hyperconjugation. C bond H is having lesser bond energy when compared to C bond D. So ये जो bond है hyperconjugation में अच्छे से जा पाएगा when compared to the C bond D. Hence CH3 वाला जो भी है it is more stable carbocation when compared to CD3. तो तब हमने पढ़ा है heavier is the isotope, stronger is the bond. तो इस पर्टिकुलर केस में भी क्या होगा? C bond T will be a stronger bond followed by C bond D and followed by C bond H. ओके, तो C bond H वाला जो बॉन्ड है जल्दी ब्रेक हो जाएगा when compared to C bond D and C bond T. ओके,
उसके रेस्पेक्ट में अभी अगर इन केस उसके रेस्पेक्ट में देखा तो तब आंसर हम A greater than B greater than C बोल सकते हैं, because in the first step there is no effect on the addition of upon addition of electrophile, because all of them are having similar electron density, almost similar electron density, because deuterium and tritium's inductive effect is not so much greater when compared to hydrogen, because it is giving electrons through inductive effect. Second step में क्या हुआ है, if you want to remove that proton or if you want to remove the D positive and D positive, वो जो bond energy जितना कम होगा उतना जल्दी bond break होगा and you can regain the aromaticity. Okay, so उस particular observation से हम किया तो answer A greater than B greater than C होना चाहिए, but actual answer क्या होता है, it is the rate of reactivity order is A equal to B equal to C. ये क्यों है समझते हैं. Out of these two steps, the first step is the rate determining step. The entire rate is depending upon only this particular step, ये वाला step. और the rate equation देखो, in the rate equation you have K into concentration of ERH and E positive. The rate is not depending on this particular molecule's concentration or in this particular molecule's identity. ये जो particular step है fast है, ये तीनों fast ही हो जाएगा, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का. उनके खुद में कंपेयर किया तो हाइड्रोजन का थोड़ा अमाउंट फास्ट हो रहा है. ये वाला होने के लिए सपोज मान लेते हैं 1 आवर लग रहा है, ये वाला होने के लिए 1 सेकंड लग रहा है, हाइड्रोजन के साथ, ड्यूटेरियम के साथ 1.1 सेकंड लग रहा है, ट्रिटियम के साथ 1.2 सेकंड्स लग रहा है. सो यू शुड नॉट से दिस पर्टिकुलर रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ बहुत जल्दी हो गया, अभी भी क्या है 1 आवर ही है. समझ में आ रहा है. The rate depends only on the rate determining step, which is the slowest step of the reaction. The loss of hydrogen is a fast step, hence you should not analyze based on that particular loss of hydrogen. Hence the rate of reactivity for all these are exactly same. This is very 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 important question. बहुत बार ऐसा रिपीट हुआ है, different तरीके से पूछा जाएगा, but basic crux concept तो यही है. समझ में आया? हाँ सर. इधर एक पॉइंट लिख रहा हूँ, स्टार मार्क पॉइंट. The rate of EAS depends only upon the attack of electrophile and not on the loss of H positive. Okay, इसके लिए एक थोड़ा सा स्टार मार्क करके लिख रहा हूँ. H positive का लॉस जो भी है, except in case of एक one of the reaction है sulfonation and iodination. ये क्यों है वो तभी पढ़ते हैं. Except in case of sulfonation and iodination, second step के ऊपर कभी भी rate depend नहीं होगा. Sulfonation and iodination के ऊपर iodination करते समय depend हो सकता है, क्यों depend होगा उन reactions में ही देखते हैं. Is this clear? Okay, another question. Again, you need to compare the order of rate of reactivity in EAS reaction. A, B, C, D. Order of rate of reactivity of these compounds. Sir, C greater than A greater than B greater than D. C greater than A greater than B greater than D. Okay. और क्या कोई आंसर? D greater than C greater than D greater है गौरी. A greater than
C greater than B greater than D. A greater than C greater than B greater than D. Any other answers? So The C greater than A greater than B greater than D. C greater than A greater than B greater than D, यही सही है. ये जो CH3 group है, it is releasing electrons by plus effect as well as hyperconjugation. Cl is withdrawing electrons. It is having minus I effect as well as plus M effect. But in case of halogens, minus I effect is more dominant when compared to plus M. And ये इसमें hyperconjugation dominant है. ये minus I है as well as plus M. Plus M is more dominant. Okay, resonance है ना? And this is minus I and minus M resonance के साथ निकाल रहे हैं. As it is giving electrons by resonance, C सबसे ज़्यादा होगा. Next hyperconjugation से दे रहा है, ये होगा. As it is withdrawing electrons by inductive effect, इसलिए B रहेगा. Resonance से निकाल रहे तो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा. Hence the answer will be C, A, B, D. The answer is C, A, B, D. Is this clear? So अभी तक हमने क्या किया है? We have started with the reactions, basic reactions of aromatic compounds. The characteristic reactions of aromatic compounds is electrophilic aromatic substitution. You are substituting H positive present on the benzene ring with the help of an electrophile. As you are substituting on the aromatic compound, it is called as EAS reaction, electrophilic aromatic substitution. In any EAS reaction, there will be 3 steps. The first step is the generation of electrophile, जो चीज तुम लोग जाके अटैक करने के लिए सोच रहे. So it involves first step as generation of electrophile. The second step is addition of that particular generated electrophile. Addition करते समय, it is converting from an aromatic compound to a non-aromatic compound. Hence, that particular step will be slow. The third step is loss of H positive to regain aromaticity. So ये जो particular step में non-aromatic से aromatic फिर से बन रहे हैं. Hence, this particular step will be faster. The slowest step of any given reaction, यही reaction नहीं, कोई भी reaction में जो भी slowest step रहता है, the entire rate of the reaction will be depending upon that particular slowest step. Hence, it is called as the rate determining step. And the rate of reaction will be written in terms of that particular rate determining step as rate is equals to K into concentrations of the reacting species raised to the powers of their stoichiometric coefficients. दोनों में एक एक molecule ही हो रहा है, so power 1. Okay, ठीक है. So if you want to increase the rate of the reaction, you need to concentrate on the rate determining step. ये जल्दी जाके अटैक कर लिया तो रेट ज्यादा हो जाएगा. जल्दी जाके अटैक होने के लिए this has to be highly electron deficient or this has to be rich in electrons. So electron releasing group इसका रेट बढ़ा जाएगा and electron withdrawing groups रेट घटा देगा. बस उसी के बारे में डिस्कस किया हमने. Now we will go to the reactions, specific reactions. एक एक reactions देखना स्टार्ट करते हैं. The first reaction which we will be seeing is nitration. Nitration मतलब addition of NO2. NO2 group is called as nitro group. तो उसको ऐड करते समय जो भी reaction होगा, that reaction is called as nitration. So if you are having benzene and if you are adding concentrated HNO3 plus concentrated H2SO4 with the help of heat, it converts into nitrobenzene. बेंजीन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप जाके लग जाएगा. एंड ये जो पर्टिकुलर मिक्सचर है concentrated HNO3 with concentrated H2SO4, it is called as nitration mixture. नाइट्रेशन करने के लिए रिएजेंट जो भी यूज हो रहे हैं, it is called as nitration mixture. Okay, what is the first step? The first step is generation of electrophile. So electrophile exactly कैसे generate होता है देखेंगे. Generation of electrophile. Okay, so you are having HNO3 in the mixture, whose structure is ये वाला.
and H2SO4. OH, S double bond O, OH. Can anyone tell me among H2SO4 and HNO3, which is a stronger acid? HNO3. HNO3. H2SO4. अभी तुम लोग try to apply the concepts of the chemistry, organic chemistry, which we have already studied. एडिक्शन कैसे कंपेयर करते हैं वो इसके बारे में सोचो. तुम लोग अपना बचपन में जो भी पढ़ा होगा HNO3 किंग ऑफ केमिकल्स, किंग ऑफ एसिड्स जो भी है, ठीक है, वो तो है. But that is because of some other reasons. Out of HNO3 and H2SO4, which is a stronger acid? Sir, H2SO4. H2SO4 is a stronger acid. H2SO4 strong acid क्यों है? यहाँ से H plus हटा दिया तो इसके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आएगा, it can go in resonance with 2 oxygens. और जो नेगेटिव चार्ज है, it will be distributed on 2 oxygens. If I am having a negative charge on this particular case, it can be distributed only on 1 oxygen. And ये डिस्ट्रीब्यूशन में भी क्या हो रहा है, थोड़ा दिक्कत आ रहा है. दिक्कत का किस वजह से आ रहा है? ये जो पर्टिकुलर ऑक्सीजन है ये भी रेजोनेंस में जाने के लिए कोशिश करेगा. So that particular negative charge may not be distributed very easily. Okay, so इसलिए out of both H2SO4 and HNO3, H2SO4 is a stronger acid in this particular context. So ये strong acid हुआ तो this will be giving H positive. ये H positive दिया तो HNO3 में ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है ना, that lone pair will be accepting that particular H positive. As a result, बनेगा क्या? You will form O minus and double bond O positive, O bond H इसके ऊपर पॉजिटिव प्लस बचा हुआ जो भी है it is HSO4 minus. Is this clear? We all know that ये जो H2O है it is a good leaving group. तो अभी क्या होता है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनेगा and this will be acting as leaving group. ये H2O जैसे बाहर चला जाएगा. H2O जैसे बाहर जाते समय क्या होगा, नाइट्रोजन के ऊपर और एक पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, उन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा. तो दिस विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ O डबल बॉन्ड N. एक बार ऑब्जर्व करो, नाइट्रोजन के लिए एक बॉन्ड की नुकसान हुआ और एक बॉन्ड बन गया, सो नेट में उसके ऊपर कुछ चेंज नहीं हुआ. तो इनिशियली जो पॉजिटिव चार्ज है वो अभी भी दिखेगा. ये जो NO2 पॉजिटिव है, इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO2. N पॉजिटिव, नाइट्रोजन का ऑटोमोस्ट और नाइट्रोजन का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 7 है. इफ यू आर रिमूविंग 1 इलेक्ट्रॉन यू विल बी हैविंग 6. तो ये जो NO2 पॉजिटिव है, इट इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक टू CO2 और आइसो स्ट्रक्चरल टू CO2. CO2 लीनियर है ना, वैसे NO2 पॉजिटिव भी लीनियर ही रहेगा. तो व्हाट इज द इलेक्ट्रोफाइल इन दिस पर्टिकुलर केस? द इलेक्ट्रोफाइल इज नथिंग बट NO2 पॉजिटिव. This is the electrophile. Is this clear? And इनके अलावा बाकी क्या क्या है? You are having H2O plus HSO4 minus. Is the first step clear? Generation of electrophile. In the generation of electrophile step, ये जो particular HNO3 है, it is acting as, can I say it is acting as Lewis base? Because it is donating lone pair of electrons to H positive. Or you can also say it is a Bronsted base. One which accepts H positive is Bronsted base. Is this clear? Sir. Okay. Whenever I ask, is this clear? Please answer me. ठीक है. What is the second step? अभी इसके बाद second step ये सब हमको पता है. Step 2, it will be attack of electrophile plus N double bond O positive. ये वाला इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे लेके आओ. ये जो नेगेटिव चार्ज है, it will be attacking on the nitrogen. Nitrogen cannot form 5 bonds.
इसलिए ये जो तब नेगेटिव चार्ज इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट होगा, which will result in the formation of, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड O, बॉन्ड O माइनस एंड इसके ऊपर पॉजिटिव। अभी ये जो हाइड्रोजन रहेगा, सिस्टम के अंदर HSO4 माइनस है ना, और जो HSO4 माइनस है attack that onto this particular hydrogen, so you will get back H2SO4 and ये जो है it will be forming a bond here. So finally product क्या मिला, बेंजीन, उसके ऊपर नाइट्रो ग्रुप मतलब कैसे रहेगा, O माइनस इसके ऊपर पॉजिटिव, this is also called as nitrobenzene. Plus H2SO4. So what is the purpose of H2SO4 in this particular case? H2SO4 is acting like catalyst. क्योंकि वापस रीगेन हो गया ना, इसी में स्टेप 3 भी मैं इंक्लूड कर दिया। दिस इज नथिंग बट स्टेप 3। Is this clear? I hope this is clear to everyone. Next reaction. अब से हम केवल इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन का स्टेप देखेंगे। इलेक्ट्रोफाइल जनरेशन होने के बाद इलेक्ट्रोफाइल को अटैक करवा के उसके बाद रीगेन ऑफ एरोमेटिसिटी, ये तो सबके लिए कॉमन ही है। अनलेस एंड अनटिल उसमें थोड़ा डिफरेंट जैसा कुछ दिख रहा है तब तक नहीं देखेंगे। लेट अस ओनली अंडरस्टैंड द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल प्रोसेस। ओके, इसी पर्टिकुलर रिएक्शन में देयर आर सम अल्टरनेट फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स, alternate nitrating agents. In place of constant HNO3 and H2SO4, you can also use this compound NO2 positive and BF4 minus. देखो इनके अंदर ऑलरेडी NO2 पॉजिटिव पहले से ही है। NO2 पॉजिटिव ClO4 माइनस। ओके, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, halogenation. What is meant by halogenation? Addition of halogens. Addition of halogens. Halogen add करने के बाद what is the product that will be formed? Halobenzene. बेंजीन के ऊपर halogen लगाना है। Reagent देखो, if you are having benzene, if you are adding X2 in the presence of any Lewis acid catalyst. Lewis acid catalyst. What is meant by Lewis acid? One which accepts lone pair of electrons. Lewis acid catalyst, like either you can simply use Fe or you can use FeX3 or anhydrous AlCl3. ये जो Fe यूज करते समय क्या होगा, Fe plus X2 पहले रिएक्ट होकर FeX3 बनेगा, that FeX3 will be acting as catalyst. Okay, or you can directly add FeX3 or you can add anhydrous AlCl3. ये जो Fe है उसके अंदर empty d orbitals है and ये जो empty orbitals है and ये जो AlCl3 है उनके अंदर भी empty orbitals है, क्योंकि एल्यूमिनियम का outermost electrons 3 है, 3 ही bonds बनाया तो 6 हुआ, so you are having a deficit of 2 electrons. Hence it can act as Lewis acid. Lewis acid catalyst मतलब one which accepts lone pair of electrons. The product formed is यहाँ पे X plus HX. Okay. In case of iodine, what will be the product formed? It will be iodobenzene plus HI. It will be iodobenzene plus HI. अभी ये जो HI है ऑलरेडी हमने बात किया है, HI is strong
reducing agent. If it is strong reducing agent, it will convert back that particular iodobenzene into benzene. So इसलिए जो particular reaction है reversible होने के वजह से it is also dependent, जो rate है it is also dependent on the second step, क्योंकि second step जो जिसमें H positive है it is a reversible step, क्योंकि HX आने के बाद HX भी H positive दे सकता है, वो H positive फिर से वापस से उसके ऊपर react होके it can again convert back into a normal benzene. So उस particular case में वो जो rate है, in that particular case the rate is also depending on that particular second step, the loss of proton H positive. ठीक है, उतना ज्यादा एनालाइज करने की जरूरत नहीं. हमको क्या देखना है? We need to see the generation of electrophile. We will be seeing only generation of electrophile. Attack of electrophile देखेंगे नहीं, already सब में common ही है. If you are having X2, if you are having FeX3, X2 में X के अंदर जो lone pairs है, that lone pairs will be given into empty orbitals of Fe. As a result, it will be converting into, ये इसके साथ दे दिया तो this will be converting into X positive plus that X formed a coordinate covalent bond with the empty orbitals of Fe. This will convert into FeX4 minus, FeX4 minus. Okay, this particular X positive, this is called as halonium ion, and this acts as electrophile. Okay, clear है? हाँ sir. हाँ. Even in this particular case, you will be preferring X2 has to be either bromine or chlorine, as with F2 the generation of F positive is almost impossible. Impossible क्यों है? Because chlorine is the most electronegative element. उसके ऊपर positive charge आना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. So we will not do the reaction with F2. With I2, the reaction is again slow and reversible. Slow क्यों है? क्योंकि I के अंदर positive charge आया तो because of having very low electron density, iodine का size बहुत ज़्यादा है ना, that positive charge is concentrated in a larger region, hence it is relatively more stable. बहुत ज़्यादा stable होने की वजह से वो I positive जल्दी जाके benzene के ऊपर attack नहीं करेगा, hence the reaction is slow. And reversible क्यों है? It is reversible due to formation of HI. Due to formation of HI, which is a strong reducing agent. Okay, उसकी वजह से reversible भी है. Hence you will not prefer to form iodobenzene using this particular reaction. उसके लिए अलग reaction है, वो बाद में देखेंगे. Iodobenzene, fluorobenzene बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, वो बाद में देखते हैं. Clear है? एक बार electrophile generate हो गया, this electrophile will be attacking on that particular benzene ring in the first step. In the next step, there will be a loss of H positive. H positive निकालने के लिए you can react that with FeX4 minus. FeX4 minus उसके साथ react करके और HX plus FeX3 वापस बन जाएगा. HX and FeX3 will be formed back. Okay. I hope today's lecture is clear to everyone. यहाँ तक करते हैं. Next section, next lecture में further reactions देखते हैं. Aromatic compounds is very important. Please go through the notes after this lecture.